आपकी हर संडे क्लास। चलिए, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3 सर्किल. योर यूनिट 2 इज डन. आई गेव यू सम प्रॉब्लम्स व्हिच यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ. कुछ उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स है, कुछ अनसॉल्व है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक भी है सर्किल यूनिट 3. द सर्किल. Okay. So equation of a circle. This is on page number chapter 7. That is page number 86 from your book. You can see you have the copy of this book. So equation of a circle. Circle, you know. I think circle you have studied in your geometry in your school. सर्किल वगैरह था उसमें भाई आपके, शायद 12th वगैरह में रहता होगा ना. यस सर. ये सर क्लास 11 में था सर. यस, 11th में रहा होगा. So we will see something more about the circles. You know, circle is equation if you have, suppose because circle is a plane curve. Plane curve means you can plot it on the plane. We are studying coordinate geometry 2-dimensional. So all these curves are plane curves. Circle is also a plane curve. When in the next semester you will study 3-dimensional geometry, then you will see the sphere is the generalization of a circle to 3 dimension. Circle is, so if you have a center, we basically denote by h comma k, and if you know the radius, so you can plot a circle if it is your o x y. So I can find the equation of a circle by the formula. How? Suppose this is a point and some point p is there, x comma y. You know circle is what? Circle is what? It is locus of a point which is moving in such a way that keeping a fixed distance from some given point. ये तो होगा. सर्किल की डेफिनेशन क्या है कि आपको एक पॉइंट गिवन है P which is center. यहाँ से अगर हम एक इस तरीके से मूव कर रहे हैं, it is always having a fixed distance. तो what it will give you? It will give you a circle. जैसे आपके जो सेकंड की सुई है, if you will see your clock, so that second सुई, it is moving always like this, so that the locus will be a circle. वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही होती है इस तरीके से. So you can find if it is center. How we can find the equation? You know that Cp square, if I am writing Cp square is equal to x minus h whole square plus y minus k whole square. It is the formula distance between these two. And if it is given that this fixed distance is some a, so you can write a square is equal to x minus h whole square plus y minus k whole square. So this is the equation of a circle. Where h and k are the centers. You can say h comma k is the center and a is the radius of the circle. So what I am doing here, if you know the coordinates of the center and if you know the radius, then you can plot the circle, है ना. सर्किल हम प्लॉट कर सकते हैं. Now if circle center is origin, if center is at origin, x square plus y square equal to a square. Suppose O 0 comma 0, then equation of circle will be simple. X square plus y square is equal to a square. This will be circle. और अगर रेडियस a हो, रेडियस भी 1 हो जाए, if a is 1, then circle is called x square plus y square is equal to 1. उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सर्किल कहते हैं उसे. Then circle is called unit circle. Center at origin. X square plus y square is equal to 1. ये यूनिट सर्किल होता है आपका.
because its radius is 1 and center is at 0. So these are the different ways you can plot a circle. You can take center at x-axis, y-axis, and so on. You can find a circle if you know all these things. If I want to write a general equation of a circle, a general equation, it is particular if you have given center and radius. The general equation of a circle. So I can find this. We know that equation of a circle is this. If HK is a center and A is the radius. If I will open this whole square, so I can write x square plus y square. Y square. I am writing in a standard form. Y square then minus 2hx minus 2ky and plus h square plus k square minus a square is equal to 0. Okay, which is of the form. इसको अगर मैं कंपेयर करूं, जो जनरल इक्वेशन हम लिखते थे कोनिक की क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर भी होता था, लेकिन इफ यू कंपेयर इट हियर यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, है ना. यही तो है, वेयर g is how much minus h where this g is minus h is minus g, you can say, where h is minus g and k is minus f and this is your a. A is how much? A का मतलब रेडियस, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट विल बी कमिंग h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो रेडियस विल बी, इसमें अगर हम लिखें तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, है ना, ये तो आता है. सो दिस इज द इक्वेशन इफ इट इज 1. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल. 1 is the general equation of a circle where h is minus g, k is minus f and this. That means what? So अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, तो सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्योंकि सेंटर हम बेसिकली क्या ले रहे थे, एस कॉमा के, एंड रेडियस विल बी दिस. तो ए रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस. So you may get the equation of a circle in this form also. And if you compare it with the general equation of second degree, if we compare equation 1 with the general equation of second degree, ax स्क्वायर प्लस क्या था भाई, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. we get how much? इससे अगर कंपेयर करें 1 को देखिए तो क्या आ रहा है, तो आपके पास a is equal to b है ना. अब यहाँ पर 1 है, लेकिन it need not necessarily be 1. It may be something, but whatever the coefficient of x square will be the coefficient of y square always. वो अलग बात है कि उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा. The point is that a is equal to b and h is equal to 0, है ना. ये अपने जब when I was writing this general equation of second degree आपको बताया भी था, when a is equal to b and h is equal to 0, this will represent a circle. So same thing here, you can see that why it was so.
because of this it will become a equation of circle जो हमने 1 लिखी थी. That means coefficient of x square should equal to coefficient of y square and coefficient of xy should be 0. Now, there is no product term of xy. This general equation of circle represents a real और अब इसकी radius देखिए है. This thing, this is a radius. अब यहाँ पर you can have different cases क्योंकि this may be negative also. If g square plus f square is less than c तो क्या होगा? It will become negative, है ना? So in the radius you have different 3 cases are possible. The radius may be 0, the radius may be imaginary, the radius may be real. तो अगर रेडियस 0 है तो उसको क्या कहेंगे? पॉइंट सर्कल होगा फिर. पॉइंट सर्किल होगा क्योंकि 0 रेडियस का क्या हो जाता है? सर्किल, पॉइंट सर्किल. इनफैक्ट पॉइंट की डेफिनेशन भी हो सकती है. इफ यू somebody ask what is a point, तो पॉइंट की डिफरेंट डेफिनेशंस है. The intersection of 2 lines is a point. A circle of radius 0 is a point. A sphere of radius 0 is a point. So there are different definitions. In terms of circle, you can say. So here you can write this case. If g square plus f square is equal to c, then equation 1 represents a point circle. Point circle. Point circle means point. Radius is 0 है आपकी, तो you are just at the center. If g square plus f square greater than c, then it represents a real circle. Then 1 represents a real circle. And if g square plus f square less than c, then 1 represents a complex, you can say imaginary circle. हम इसे कहते हैं imaginary circle. Imaginary circle. Radius plot नहीं कर सकते तो we say it's a imaginary circle. And I told you that जो imaginary points हैं ये imaginary है. In the analytic geometry they have their use and application. We will be dealing with circles with some real radius. Okay, so here you can see that in the equation you have how many constants? G, F and C. 3 unknowns are there. So if 3 conditions are given to you, you can find your circle, है ना? भाई आपके क्वेश्चन में कितने unknowns निकाल होंगे? G, F, C. So 3 constants are there. 3 unknowns are there. So whenever you want to find the circle, you have to find these 3 unknowns. तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको? 3 conditions at least will be given to you. Okay? जैसे a circle passing through 3 points, ये दिया होगा या तो a circle passing through 3 points, 3 points से पास हो रहा है. 3 points में आप क्या करेंगे? 3 points put करेंगे, you will be getting 3 equation problem करेंगे आगे. So this circle can be determined whenever 3 conditions are given to you. जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हेन 7.14 आर्टिकल पेज नंबर 88. इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन diameter, equation of the circle. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are. Okay. So equation of the circle when one of whose diameter is the line joining 2 points, you can say. One of whose diameter is the line joining
the points x1 y1 and x2 y2. ठीक है, मीन्स लाइक दिस, यू हैव अ सर्किल और इसमें आपके 2 पॉइंट्स मालूम है, मान लो तो कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे आप उसको हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं, या लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। यहाँ से अगर हमने ऐसा करा कि वो डायमीटर से हो गया, मतलब नॉट ऑलवेज, अगर मैं पॉइंट यहाँ लूंगा तो ऐसा नहीं होगी। तो पॉइंट इन सच अ वे दैट यू कैन ज्वाइन बाय अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे ही वो सेंटर से पास होगी डायमीटर बन जाएगी। तो सपोज ए इज गिवन टू यू x1 y1, b is given to you x2 y2, and I want to find what is the equation। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3 कंडीशंस है आपके पास। व्हाट आर द 3 कंडीशंस? क्या 3 कंडीशंस हैं? पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू बी एंड पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर, है ना। थर्ड कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे? पासिंग थ्रू सेंटर। अगर 3 पॉइंट्स passing नहीं through है, center. ये भी एक कंडीशन है ना। दिस इज आल्सो अ कंडीशन दैट दिस इज पासिंग थ्रू अ सेंटर, तभी डायमीटर बन रही है। So if it is the condition, so what I will do, suppose some arbitrary point p x y is there, कोई भी arbitrary point choose कर लिया आपने, let p x y be any point on the circle, and you know the geometry. If I will join this, तो how much this angle? ये angle कितना होता है सेमी सर्किल में? The angle subtended 90 in the Sir, 90 circle degree. by the diameter. Yes, सेमी सर्किल में सारे एंगल 90 हो सर। एवरी एंगल इज 90। कोई भी आप अगर ज्वाइन करेंगे डायमीटर को लेते हुए तो सेमी सर्किल में इट विल बी अ राइट एंगल है। सेमी सर्किल है आपका, बिकॉज इट्स डायमीटर, इट्स अ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मींस हाफ सर्किल, इट विल बी 90 डिग्री। तो यू नो इफ इट इज 90 डिग्री, सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसमें कुछ रिलेशन होगा आपस में? सपोज Yes, sir, their multiplication will be -1. yes, if it is the slope of m1, it's the slope of m2, then m1 m2 will be -1. That's true, है ना, we know then। so 2 things we should keep in mind, है ना। ये चीज अगर मालूम है तभी we can proceed। so mathematics में every concept is interrelated। अगर ये concept नहीं पता, I cannot proceed। क्या? ये सेमी सर्किल में जो एंगल्स होते हैं they are right angle। if they are right angle, then the relation between the slopes is m1 dot m2 is equal to -1। okay, so we know m1 m2 is equal to -1। अब m1 कितना होगा? m1 is what? if you know 2 points, then what is the slope? m1 is how much? x minus, पहले x आएगा y? फिर y आएगा पहले। y आएगा, वही आएगा सर। y minus y1 upon x minus x1 into m2 y minus y2 upon y2 upon x minus x2 this should equal to -1, है ना, -1। because of this property। so this implies that इसे solve कर लो, बस ये equation आ जाएगी आपके पास। so I can write, Yes. just take it here this side। so you got y minus y1 y minus y2 is equal to minus times x minus x1 x minus x2, or you can write in the standard form x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0। so it is a simple equation of a circle when coordinates of a diameter are known to you। ठीक है, इजीली रिमेम्बर। इसी को जब आप आगे 3D में स्फीयर पढ़ेंगे तो यही प्लस z माइनस z1 टू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0 वाला जाता है, क्योंकि स्फीयर में 3 डायमेंशन में यू विल बी हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। so this is the equation of a circle।
इसमें एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप इसे कर सकते हैं क्योंकि सर्किल आप पहले से पढ़े हुए। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 88 पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through uh, 3 points are given to you, 0, 1, 1, 0 and 2, 1. Okay, so 3 conditions बनेगी as I told you. You can do this problem. बताइए क्या होगा। सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे आप यहाँ पे, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। लेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, जनरल इक्वेशन लेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Now this is passing through this point, so 1 you will be putting 1 by 1, you will be getting 3 conditions, है ना। 1 passing through all these 3 points, 0 1 1 0 2 1। तो जब 0 1 वाला पॉइंट से पास होगा तो क्या रखेंगे, 0 1 रखिए यहाँ पे। हाउ मच इट विल कमिंग, x कोऑर्डिनेट टू 0, यू हैव 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन आ जाएगी। 1, 0 रखा आपने, 1, 0, तो 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड देन 2, 1। So 2, 1 is 2 square plus 1 5 plus 2 to the 4 g plus 2f plus c is equal to 0. It is question number 4. So f c g 3 unknown, 3 equation solve कर सकते हैं इसे। Yes? Yes, sir. C1 आ जाएगा यहाँ पर, f is -1, g is -1, उठा के 1 में रख देंगे, it will give you the answer. So as I told you, 3 conditions will be required there, you can solve it. देखिए इसमें जो है प्रॉब्लम थी आपकी जो सिलेबस में है, वैसे इसमें और प्रॉब्लम्स हैं, but it is only one problem which was here. If you want to try some more problems, you can do it. Next topic we have equation of a tangent, है ना। The important concept, you know, circle जब भी कोई कर्व आता है, then we have the tangent. 7.2 page 9, equation of a tangent. Equation of a tangent. You have some circle like this, and at some point, what is the, this is the tangent, you know, which is just touching at some point. Yeah, this point is called point of contact, x dash comma y dash. सर्किल के यहाँ कुछ रेडियस होगी, ये कुछ सेंटर है, सपोज दिस विल बी अ सेंटर, माइनस g कॉमा माइनस f टाइम floating by c. So we will use our known concept. We know that the equation of a tangent to a point, we know that the equation of the tangent at some point P, x dash y dash, to the conic, conic हम क्या लेते थे, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx is given by, क्या इक्वेशन थी t की, कोई बताएगा। a इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ax Sir, x dash, yes sir. Yes. Ax x dash plus h ब्रैकेट में xy1 plus yx1 डैश बोलिए इसे, plus वन b नहीं है, plus b y dash y dash plus g x plus x dash plus f y plus y dash plus c is equal to है ना, 0. ये होता है। स्क्वायर टर्म को भी राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एंड समेशन को वी विल राइट दिस। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ टेंजेंट।
Now because we know, Excuse me, sir. yes, Sir, is there any reason behind taking the coordinates of the center of the circle as minus g and minus f? yes, I told you, na, here I derived it. You didn't see it. It is the equation of a circle. So when I solved it, I Yes, sir. got this. This is the equation. So when you compare it with this standard form here, you can see that what is, if you compare it, what h is minus g and k is minus f. So here hk was the center. यहाँ पर I was taking hk as a center. So center coordinate is coming minus g comma minus f in the standard form. Here I got it. है ना? When I compared with this. Okay, sir, I got it. Thank you. Yes. And this is the radius. Why I take radius is g square plus f square minus c, because this is the factor. This is the term. ये क्या है? H is g, k is f, and minus c. So that's why we are taking this. So now, if it is the equation of a tangent t, this is for this general equation. Now we know the equation of a circle. We have circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So equation of tangent is given by I can write direct from this x dash plus y dash plus x g times x plus x dash plus f times y plus y dash plus c is equal to 0, है ना. डायरेक्ट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि we have already derived this for the general conic. Already हमने derive किया था ये in chapter 2. So direct, because it is this circle is the particular case of this general conic, so tangent will become this. Okay, so this is the equation of a tangent. अब we will find कि इस tangent में और इस radius में कुछ relation है क्या? कुछ relation होता है आपस में, देखते हैं क्या होता है. What is the relation between a tangent and if we are drawing a perpendicular from this, we are joining this radius. So if you find the slope, what is the slope of tangent? ये एक लाइन की इक्वेशन है, देखो इट इज अ लाइन, क्योंकि x और y में है ना, स्क्वायर टर्म नहीं है, 2 डिग्री टर्म नहीं है. तो स्लोप क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. यू नो कोफिशिएंट ऑफ x व्हेन कोफिशिएंट ऑफ y इज 1. तो y के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इसे लेफ्ट हैंड साइड, सबको राइट हैंड साइड ले जाइए. तो क्या आ रहा होगा? x का कोफिशिएंट देखिए क्या आएगा यहाँ पर, एक तो यहाँ x डैश है और एक g. तो इट विल बी कमिंग स्लोप इज m इज इक्वल टू माइनस x डैश प्लस g, और y का कोफिशिएंट कितना है? y डैश प्लस एक यहाँ से आ रहा है f, है ना, y डैश प्लस f. सो दिस विल बी योर m. अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस टाइम्स. क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ y आई एम टेकिंग व्हाट, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? y डैश प्लस f, इसमें y आ रहा है. ओके, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ये जो टेंजेंट जा रही है आपकी, दिस लाइन. ओके, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ CP? CP भी एक आपके पास एक लाइन है ज्वाइनिंग द सेंटर विद दिस पॉइंट. ऑल्सो स्लोप ऑफ CP, तो CP का स्लोप आपके पास क्या जाएगा? वही फॉर्मूले से, y डैश माइनस माइनस f, तो इट विल बी y डैश प्लस f एंड x डैश प्लस g, है ना. सपोज इट इज m1, it is m2. Now if you will take the product of m1 dot m2, क्या आएगा देखिए जरा, माइनस x डैश प्लस g, -1 आएगा सर. माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना. यहाँ हमने करके भी दिखा दिया ऐसे. इट इज कमिंग -1. सो इट मीन्स व्हाट? टेंजेंट एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट. इस पॉइंट से अगर हम रेडियस पे जाएं
तो ये जो आपके पास टेंजेंट है ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट द टेंजेंट एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का नोटेशन होता है शॉर्ट, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट। थ्रू दैट पॉइंट, ये एक ऑब्जर्वेशन है सिंपल। अब यहाँ से अगर आपके पास कोई यूनिट सर्किल है या स्टैंडर्ड सर्किल है whose सेंटर इज 0 0, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। वो एक सिंपल सी कॉर्डरी है। इफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x x dash plus y y dash is equal to a square, where x dash y dash are the points of contact. Once you know the tangent, you can find the normal also. The next topic is normal. Normal क्या होता है भाई? What is normal? If you have a circle and suppose you have a tangent at some point, then what is normal? The normal is always perpendicular to Tangent. tangent. Yes. If it is tangent, then normal is perpendicular. तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उसके स्लोप के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1, है ना। तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो उसमें बस रिप्लेस कर दो उसको विद माइनस m2 विल बी -1/m1, अगर ये m1 है ये m2 है। तो दैट इज नॉट अ बिग टास्क, यू कैन फाइंड। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर सर्किल आपको गिवन है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अगर टेंजेंट का आपके पास स्लोप मालूम है, अभी आपने निकाला पीछे, टेंजेंट का स्लोप क्या निकला था, ये था, है ना, ये इस टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज, टेंजेंट्स को अगर मैं यहाँ कुछ नंबर डाल देता हूँ, सपोज इसे हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर a कर देते हैं, 1 2 तो पीछे कर था। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ a, m1 इट वाज कमिंग, कितना था भाई, -x डैश प्लस g ओवर y डैश प्लस f। सो डायरेक्ट यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ, क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट तो आपके यहाँ पर है ही, x डैश y डैश पॉइंट तो मैं ले ही रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x डैश y डैश एंड परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्ट यू कैन राइट y माइनस y डैश, स्लोप विल बी व्हाट, -1/m1, तो -1/x डैश प्लस g, और ये भी माइनस में है, अपॉन y डैश प्लस f, है ना, -1/this x माइनस x डैश। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इट विल गो अप, तो यू विल बी हैविंग दिस इज नथिंग बट y डैश प्लस f x डैश प्लस g x माइनस x डैश। ओके, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल पासिंग थ्रू x डैश y डैश। ये आ जाएगी। So after arranging the terms, you can solve it, and so you will be getting y times x dash plus g, take it on left hand side, minus x times y dash plus f, and plus f x dash, and I think minus g y dash, क्योंकि यहाँ g आएगा माइनस, यस, minus g y dash is equal to 0. Okay, so this is the equation of a normal. सिंपल ज्योमेट्री थी। इन पर्टिकुलर अगर आपके पास सर्किल है इस टाइप का, तो क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पर
इससे डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं क्या, एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ 0 था ना शायद, इट वाज 0 हियर, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 होता है, दैट इज 0। तो No, sir. Sir, in the book is a square. ये स्क्वायर ही है क्या? Yes, sir. एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ए स्क्वायर ही होगा फिर। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो चलिए तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास पीछे क्या इक्वेशन आई थी, 1 मिनट। अगर यहाँ पर ये 0 0 सेंटर हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, जी 0 होगा, एफ 0 होगा, है ना। ठीक है, यहाँ 0 क्योंकि सी बचेगा ना, सी की वैल्यू क्या है, सी क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर। सी यहाँ से कंपेयर किया था हमने, क्या था, सी इज हाउ मच, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, बल्कि सी इधर लेंगे, इसे इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस, यस हाँ, तो ए बचेगा। ठीक है, ठीक है, सी की वैल्यू ए स्क्वायर आएगी, करेक्ट है, सी इज ए स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 0 आ रहा है, उसकी वजह भी ये है क्योंकि यहाँ पर कहीं सी नहीं आ रहा ना, एक्चुअली देखिए, है ना, यहाँ सी नहीं है। तो जब आप 0 रखेंगे किसको, सेंटर जब इसका 0 हो गया तो एफ एंड जी इज 0, तो जी 0 रखा तो वाई एक्स डैश, एफ 0 रखा आपने माइनस एक्स एफ डी, है ना, ये भी 0 ये भी 0, इसका सेंटर क्या है 0, तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर था, करेक्ट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड every normal to a circle passing through a center, है ना, ये रिजल्ट है कि किस हमेशा हर नॉर्मल अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो वो क्या होगी, सेंटर से पास होके जाएगी। ओके, Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा इससे अगर थोड़ा सा वो करें, सर्किल बनाते हैं। ये एक सर्किल है आपके पास और ये एक टेंजेंट लाइन है, सपोज दिस इज आवर टेंजेंट लाइन, है ना, ये थोड़ा सा करते हैं। नाउ यू नो इफ आई विल टेक अ नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस इज आवर नॉर्मल, इधर आ भाई किधर जा रहा है, so if I will extend it, it will be going like this, I can take